फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स देखता हूँ या फिर उनका लाइफस्टाइल देखता हूँ, इज इट एक्चुअली दिस फैंसी और दे शो दिस फैंसी? एडवाइस सिर्फ उनसे लेनी है from people that you're okay trading places with in that area of life. But it's not about doing the 90% of the work. It's about doing that extra 10%. Some people are like glass is half full, so some people are like glass is half empty. I just think like there's more room in the glass and you can pour more. $4,000 a month. Okay. He's like, bro, this is so expensive. $4,000. Can money solve all your problems? भाई अगर ये बंदा क्लोज हो गया तो चांदी हो गई। 10,000, 20,000, $1,00,000 सबसे खुश बंदा तब होगा when they are growing and giving. If you're not growing and giving, you're not going to be happy. 99% of the people that win a lottery is they're going to end up in a worse financial situation within 5 years. क्योंकि वो इंसान नहीं बने जो कि वो $1 million डिजर्व करते हैं। Welcome to another episode of Take 2 Action. This is the second take of my life and hopefully yours too. क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में क्यों सोचते हैं? जैसे कि आज हमारी सैलरी $50,000 होगी तो हम हमेशा सोचेंगे कि $50,000 से $70,000 कैसे कमाएं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर लेंगे क्योंकि हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है लेकिन आप फिर भी पैसे सेव नहीं कर पाते बिकॉज विद टाइम एंड मोर रिसोर्सेज आपकी नीड्स बढ़ती जाती है, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता जाता है। ऑल्सो इन्फ्लेशन बढ़ती है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ज़्यादा पैसे कमाने से ज़्यादा उन्हीं पैसों को अच्छे से मैनेज करने में है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ दैट वन बिग ब्रदर जिसकी ज़रूरत हम सबको है अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो दुबई से कनाडा एक इमिग्रेंट की तरह आए थे। ही ट्राइड मल्टीपल जॉब्स एंड मल्टीपल बिजनेसेस इन ट्रेंड। Few years back, he got his calling from the finance industry. He is a brilliant public speaker and more than that, he's a great personality to talk to. He's a very inspirational guy. Introduction थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया ना? आप सभी का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, let me introduce you to today's guest, my own financial advisor, Mr. Ranvir Nagra. Okay, Ranvir, welcome to Take 2 and Action. This is on. This is on. This is on. All right, you can put that in the video. It's okay. Yeah, it's good. It's completely raw. All right, perfect. Yeah. Thanks for having me, bro. I appreciate that. So, आपका दिन कैसा रहा आज? दिन was busy, bro. On Sundays, see, the thing is, most people take it Sunday as like, okay, you know what? I'm going to take off. I'm going to relax on Sunday. But then what they notice is on Monday, they're not as productive. On Tuesday, they're not as productive. You know what happens on Sunday? I used to do this. On Sunday, I would watch a movie for 2 hours. I would relax for an hour. I would do this, watch TikToks for an hour or so. And then on Monday, because my dopamine levels were so high on Sundays, on Monday, I don't feel like going to work at all. Oh, yeah. So for the first half a day or for the rest of the Monday, I'm not as productive. So now on Sundays, I've actually like completely switched to 360. So instead of taking time off, I take Sunday as a step away from my business, but I'm still on it. I'm still going to the gym. I'm still doing things. So my Sunday is as much planned as someone would have their Monday or Tuesday planned. Because the week doesn't start on Monday. It starts on Sunday evening at 8 p.m. Okay, when we are having the podcast. When we are having the podcast, this is when the week is starting. Yes, so exactly when we're having the podcast on Sunday. So you're starting the week with this podcast. Yeah, that's it. So on the grind, let's go after it. Yes. आपका जो routine है, आपने बताया that you don't have a specific plan for Sunday because you don't want the dopamine thing. No, I actually have a plan for Sunday. My Sunday is very, very, very well planned. Okay. And I have like 3 to 5 things I want to make sure I get them done on Sunday. Okay. Right? So my Sunday is as much planned. मेरा Sunday मतलब ऐसे होता है जैसे कि किसी का कोई Monday होता है. उनको होता है कि हाँ भी मेरे सुबह को ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है. So मेरा Sunday वैसे होता है. Instead of Sunday को मैं कोई planning ना करूँ, मेरी Sunday की सबसे ज़्यादा planning होती है. Reason मेरी जो नेक्स्ट वीक है वो संडे को शुरू होगी, मंडे को नहीं। ओके एंड जस्ट इन केस यू वांट टू हैव फन सो यू इंक्लूड इट in your week or for having fun? Yeah, for Saturday night, Friday night, that's what it's for. Yeah. Okay. Yeah. You have that? Yeah, of course. Yeah, I mean, it's part of life. Because if I notice that if you're not being social, then you're not going to be as productive in your business side. Because the way we are designed, the way we are wired,
We need that those social interactions. कई लोगों को होता है कि हाँ भी मैं काम करने लग गया, मैं 7 दिन काम ही करूँगा. No, BS. Don't do that. Okay. Right? कई लोगों को हो गया कि हाँ भी अब मैं काम करूँगा, I'm not gonna have any relationships. मैंने बस काम ही करना है, focus ही करना है. If you're starting a new business, dude, don't do that. Okay. Work 6 days, it's good. Take 1 day off, no problem. But I'm saying on Sundays, don't drift. कि हवा यहाँ पे चली गई, हम यहाँ चले गए, हवा यहाँ पे आ गई, हम यहाँ पे गए. Have a scheduled day, so that way it's productive, and for next week you're on the go. You're like a little bit more ready versus other people who are like dreading, okay, it's Monday again, I have to go to work and this and that. एंड जैसे कि मेरे को पता था कि आपकी जर्नी थोड़ी सी मेरे से अलग है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर हियर इज अ लिटिल डिफरेंट. आप आई थिंक बोर्न एंड ब्रॉट अप दुबई में थे. So I was raised in Dubai, yes. Raised in Dubai. Yes. So आपकी जर्नी कैसी रही? Because your upbringing might have been a little different from a person जो कि शायद पंजाब से सीधे यहाँ कनाडा आया है. So how did you feel the change coming from Dubai over here? It's crazy how people think maybe upbringing थोड़ी different होगी, but here's the thing, bro. Brown parents are brown parents everywhere. So whether you're in Dubai, whether you're in US, whether you're in Canada, they're everywhere. Like they're the same, right? आपको भी छित्तर पड़ते थे? Everything, bro. Everything is like, yeah. Mom is like, I'm gonna call that. You like, do you want to behave? I was like, okay, sounds good. I'll be right. So yeah, but it's the journey, man. It's just like it makes you who you are. Okay. The journey, people, people get into a victim mindset. What's a victim mindset? Oh, I'm not from around here. I cannot succeed as much as this person can. That's a victim mindset, limiting belief. People think, oh, you know what? मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है. That's why I'm not gonna succeed. But whatever happens with you, life happens for you, not to you. Meaning, जो भी आपके साथ life में हुआ है in the past, you should think of it as an asset. So when it comes to my journey, I grew up in Dubai, great. I got exposed to their culture. Then I moved here in high school, great. I got exposed to their culture as well. And then I went to school in India too. So okay, great. मेरा exposure वहाँ पे भी basically हो गया. Before getting into business, I was thinking, man, I wish कि या तो मैं यहाँ पे born हुआ होता, या मैं इंडिया में हुआ होता, या मैं पूरी अपनी लाइफ टाइम दुबई में रहा होता, ताकि मेरे friend group, circle, all that, it should have been the same. But people who are like international students, it's really good for them that they're moving here, right? Because now they have exposure to 2 different communities, right? So before coming into the business, I used to look at it as like a liability. That man, I wish कि मेरी दुबई में सारी लाइफ चली जाती. Okay, you were liking it over there? Yeah, I mean, if you grew up in one city and you have all your friends there, and then you have to move to a different city, you're not gonna like it. Exactly. Right? But then after that, I changed my mindset. I was like, no, I should look at that as an asset. कि ये मेरे benefits के लिए हुआ, and then इसमें से ये journey में से, how can I think of it as like how it's gonna benefit me right now? Okay, great. I grew up in Dubai. मुझे हिंदी बोलनी आती है. Right. I grew up in India. Okay, great. मुझे वहाँ का culture भी पता है. And I went to high school here. Okay, great. मुझे इनकी culture का भी पता है. Before that was, man, I wish मेरा यहीं पे हुआ होता, सब कुछ हुआ होता. No. Your past life, whenever you look into the past, you should only look for, because there's no such thing as like failure, but you should only look for inspiration कि हाँ मैंने ये गलत किया. So you should look into the past सीखने के लिए कि हाँ मैं अपने past से I can learn this, I can learn that. Only lessons. Yes. No regrets. Yes. पैसा was one of the motivational factors when that mindset switch happened. कि आपके दिमाग में था I wanna reach that level, तो मुझे कुछ चीज़ें differently करनी है. आपके माइंड में ये था कि आपको बहुत पैसा कमाना है या आपको वैसा कुछ करना है जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो. So the thing is, मेरे लिए ये नहीं इम्पोर्टेंट कि मुझे पैसा कमाना है, और मेरे लिए ये भी नहीं इम्पोर्टेंट कि हाँ भी मुझे ये करना है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है. मुझे बस ये इम्पोर्टेंट है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और कौन सा व्हीकल मुझे यहाँ से, फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ, Okay. मुझे कौन सा व्हीकल यहाँ तक सबसे एफिशिएंटली, मॉरली, एथिकली, लीगली, फास्टेस्ट तरीके से लेके जा सकता है. दैट्स इट. So for example, if I was here, like when I'm starting, I just graduated, I'm 20 years old. Now I'm like, okay, by the age of 30, मुझे 10 million की portfolio तक पहुंचना है कि मेरे पास $10 million saved है. कि मैं podcast करूं, मैं इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर बनूं, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में जाऊं, मैं रियल एस्टेट में जाऊं, मैं कार सेल्स में जाऊं, या मैं बुक्स लिखनी शुरू करूं, क्या करूं मैं. सो जो व्हीकल मुझे ये डेस्टिनेशन पे सबसे ज़्यादा जल्दी लेके जाएगा, अच्छे तरीके से, प्रॉपरली, विदाउट लाइक ऑब्वियसली हर्टिंग अदर पीपल, लीगली, राइट, great, I'm gonna take that vehicle.
I don't like it, no problem. Okay. No problem. Okay. Because think about it, bro. Doctors, they study for how long? 10 years? 10 years. Yeah, maybe more. Maybe more. And they're always learning. Right. They're always educating themselves. Right. A surgeon will stay in the surgery for hours and hours, 10 hours, 15 hours. Do you really think he enjoys it? No way, bro. Yeah, I mean, like, maybe not the study part, because I think... Even the surgery part. But you know what he does enjoy? The result, the outcome. That, okay, you know what? I was able to save this person's life. Right. Hey, you know what? Because of me, I saved this person, and his wife and his children are going to have, wife is going to have a husband, children are going to have a dad. So it was the outcome, the destination that he was after, if that was his motivation. But again, like whatever you do, whether it's the podcast, whether the industry that I'm in, there's no such thing where you're going to enjoy it for 100% of the times. Yeah, mostly ऐसे times होंगे जहाँ पर आप ऐसी situation में होगे that why I'm doing this. But I think एक bigger purpose पे, this is what I believe. Sure. Money cannot be the only thing Of course. you should be aiming for. Yes. Because if you're thinking about 1 million, you'll be there. उसके बाद it'll be like 2, 5 million. It'll be like, so you cannot switch careers or like change your jobs thinking about money as the only benchmark. This is what I believe. Yeah, you shouldn't think of money as the only benchmark. It's more about like the impact you're going to make. Right. And coming back to the work example, if you're doing something just to get to the destination, sure. But if you love what you do, Right. then it just makes it easier. Exactly. If people go, oh, Ranvir, I don't love this industry, but I'm thinking about going into it. Okay, make yourself fall in love with it. How? Talk to yourself every single day. It's all about the self-talk. Right. You can make yourself fall into love with something. And you can make yourself fall out of love from something. When someone starts dating someone, think about it. Why do we actually love someone? Okay, they did something nice for me. So now the inner dialogue in our mind is going to be like, oh, she's so nice. Right. Or he's so nice. Right. Okay, she cares for me. Or she does this for me. She does that for me. This, boom, 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 boom. Okay, great. And then eventually you start falling in love with her. Okay. When you fall out of love with someone or you break up, why? It's the inner dialogue. It's the self-talk. Oh, then you start looking at the negatives. Okay. This is not good. This is not good. This is not good. Then you make yourself fall out of love from that person. Okay. So if you start something, you don't love it, no problem. Make yourself fall in love with it. Okay. But like, for example, the industry that I'm in, I didn't love it in the beginning, right? Because it was tough. It was a lot of numbers, right? It was challenging. I didn't know a lot about finance, taxes, boring topics, dry, right? But then I was like, no, you know what, Ranvir, you get to help people. First, when I started, maybe my passion for helping people was here. And then I started developing it. Now I love helping people. Because again, it's not something that came overnight, but I developed my love for my craft. So it's not even like some people think about, sit down at their house and they're like, okay, something I love. Dude, you can love anything you want. अच्छा. Change. ठीक है. Yeah. पर आपने finance industry, if I'm right, you can correct me if I'm Financial wrong. industry, wealth management, yeah. Yeah. Financial industry में आने से पहले क्या career options try किए, क्या businesses try करे हैं? Share something about that, because I want people, जिस तरह मैं यहाँ पे आया था as an international student, there are a lot of people जो चलो ना सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, पीपल इन इंडिया जो कि डिफरेंट स्टेट्स में पढ़ने जा रहे हैं या फिर अपनी हायर एजुकेशन प्लान आउट कर रहे हैं, उनको भी एक एग्जांपल मिले कि आपने कैसे शुरुआत करी थी एंड वो कुछ सीख पाए कि आप जहाँ पर अभी हो, इस मुकाम पे हो, यहाँ पर कैसे पहुंचे, इफ दे गेट टू लर्न फ्रॉम योर जर्नी. Yeah, for sure. So, सबसे big, like one of the biggest learnings I've had is advice सिर्फ उनसे लेनी है, from people that you're okay trading places with in that area of life. Meaning, if my doctor smokes, he's not my doctor. If my personal trainer shows up without abs, he's not my personal trainer anymore. Right. This actually happened at my gym. He's like shows up, but he wasn't fit. He was like, he was trying to sell me personal training. I was like, dude, there's no way I'm like, you're gonna be able to sell me. Right? Yeah. I'm a nice person, but sometimes it's just like, okay, whatever, bro. Like, go away. Because belief is very important. Yeah, belief is open, but you're not taking your own medicine. You cannot sell shoes bare feet. Right. I cannot stand here bare feet and tell you that, hey, you know what? I mean, you need shoes. You'll be like, तेरे खुद के कहाँ हैं? तूने खुद क्यों नहीं डाले? अगर ये इतने ही ज़रूरी हैं, then why don't you have it yourself? Right? So coming back to the journey, I've tried like
15, 20 different industries. Share few of them. I mean, like the top ones that you liked, and you had a feeling that you'll make it with this career option, or Yeah. I think a lot of people might be thinking into going into e-commerce right now, drop shipping. Okay. So I tried that. Right, it's funny. I'm wearing my shirt. It's from my own brand. So again, yeah, you can learn from everywhere and and anyone, right? So yeah, man, I started this drop shipping thing around the time of COVID. It was a great learning experience, right? But again, I realized that there's a lot of things which are not in my control in that business. जब ये इन्वेंटरी के लिए मैंने इनको $10,000 $20,000 भेज दिया चाइना को, वहां से मेरी शिपमेंट आनी है. हाँ जी. काफ़ी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ये कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, दिस एंड दैट, ये कैसा फिर मैं मार्केट करूंगा, इसके कैसे रिव्यूज आएंगे, दिस एंड दैट, राइट? So drop shipping was one industry. Again, I'm not saying it's a bad market. I'm not saying it's a saturated market. You can make money in any industry. You can be successful in any industry if you're willing to work. And majority of the times, it's not even the work that people are doing. Everyone's going to do the basics. For example, you're doing podcasts. Everyone who starts a podcast is going to have a guest on their podcast. Exactly. They're going to prepare and they're going to ask questions. बिल्कुल. But it's not about doing the 90% of the work, because everyone's going to do that 90% of the work, no matter what industry you're in. It's about doing that extra 10%. 10 लोगों ने podcast start किया, out of that 8 people, उन्होंने एक podcast shoot किया, उसकी editing हो गई, they listen to it once, twice, 3 times, they're like, okay, this is good. जी. But people who are going to make the difference is they listen to it 4 more times. And then they're going to go back to it after 6 months again. And then they're going to listen to it again. And they're going to take notes on it. But again, एक बंदे ने दूसरे बंदे ने, दोनों ने एक बंदे ने 90% काम किया, एक बंदे ने 100% काम किया. उससे मैंने 10% काम ज़्यादा किया, but जो मेरे results होंगे, वो उससे 1000% ज़्यादा होंगे. Because winning is in that 10%. Everyone's going to go to the gym, right? But काफ़ी लोगों ने वो intensity के साथ workout नहीं करना. जी. वर्कआउट आधे घंटे के लिए सबने करना है, 45 मिनट्स के लिए सबने करना है, बट रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके आएंगे जो इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं, थोड़ा सा और. सो इट्स नॉट अबाउट लाइक डूइंग 90% ऑफ द वर्क. कोई भी इंडस्ट्री में सब लोगों ने 90% काम करना है, बट एक्स्ट्रा 10%. एक क्लाइंट्स के पास someone came on as a client, great, everyone is a client, okay, great, सब financial advisors के client हो गए, but remembering when that client's birthday is and messaging that client on his birthday. Yeah, it makes a big difference. It makes a big difference, day and night. Yeah, so if something like this happens to me, sure. If someone does this to me, so he's my financial advisor too, though. Sure. So if you do that to me, yeah, I'll keep that in my memory that he's a nice guy. Yeah. And apart from the business perspective, I'll have a good image of you in my mind, right? Yeah, 100%. So see, अगर तू किसी और फाइनेंशियल एडवाइजर के पास होता, उन्होंने तेरा पोर्टफोलियो मैनेज किया, दैट्स इट. जी. बट कितने लोगों ने तुझे हैप्पी बर्थडे मैसेज किया? यू हैव पॉडकास्ट ऑन द गेस्ट, यू हैव अ गेस्ट ऑन योर पॉडकास्ट. जी. उन लोगों ने और भी कोई पॉडकास्ट किया होगा, बट अगेन इफ यू गेट टू नो समवन एंड यू आर लाइक, ओके, दिस पर्सन इज वेरी गुड, आई शुड गिव हिम दिस बुक, आई शुड गिफ्ट इट टू हिम, राइट. and then वो बंदे ने, he's going to refer you 5 more people for your podcast. Exactly. Right? So it's not like 90% काम नहीं, 90% से थोड़ा सा ज़्यादा. थोड़ा जितना सब लोगों ने नॉर्मली करना है इंडस्ट्री में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा. Noted. This is an important thing. I learned this from you आज. Yeah. And it's a big thing from me. थोड़ा सा ज़्यादा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले let me talk to you about today's sponsor, Urban Men Studio. They styled me particularly for this podcast. They have an amazing collection of men's apparel, both formal and traditional wear. They are located in the Payal Business Center. Also, you can book an online appointment. I'll mention their link in the bio. Do check them out. Support the local businesses. Let's get back to the podcast. एक बहुत ऐसे शायद foolish question लगेगा. Sure. But there's no such thing as foolish question. Yeah, You're just curious. I mean, I'm quite curious about this thing because जब मैं like high school में भी था, तो मैं finance term सुनता था and it was a very fancy term. Sure. And जब मैं यहाँ पे भी आके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स देखता हूँ या फिर उनका लाइफस्टाइल देखता हूँ, इज इट एक्चुअली दिस फैंसी और दे शो दिस फैंसी
क्या है, या फिर वो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं कि ताकि पीपल बिलीव इन देम. So fancy in the sense कि like वो restaurants में जा रहे हैं, पैसे spend कर रहे हैं, is that what you Yeah, mean? I mean, like they're showing that they earn a lot, they have like a lifestyle which everyone wants in their life. Is it like just for the showbiz, or they are actually having it? So no matter who you look at or no matter what industry you look at, whether it's finance or real estate or mortgage brokers, there's always going to be two types of people. First are like, okay, you know what? They're going to show something, but reality is something else. And people can feel it on their energy. Ji. They can sense it. Right. You'll sit down with someone table face to face, right? Everything will be good. The paperwork is good. The person is like, you should do this, this, this. Ji. You're like, okay, everything makes sense. But something, it's called the gut feeling. Okay. You're like, something so. कुछ तो है कि which is stopping me, मुझे इसके साथ move forward नहीं करना चाहिए. Okay. Right? So the thing is about social media, sure, people can put out a lot of stuff. Some people actually live very fancy life. Some people show they live fancy lives in every industry, not just finance. Okay. Right? But where you're actually going to be able to see if it's real or not, it's from the energy. The handshake, you look someone in the eyes and you talk to them, you're like, okay, this guy's for real. And it's not even like something that they said. They could say all the right things. But it's just some energy that you're going to sense from them. It's just someone you're friends with. You're just like, okay, you know what, ye mera dost hai, ye mera dost hai, ye mera dost hai, ye mera dost hai. But you're going to trust one person more than the other. Why? Sab log wohi friend group mein hai, but there's one banda like you trust more than the others. Feeling Kyunki और uski energy different. Right. वो energy कैसे develop होती है? Sometimes, अगर मैंने कुछ गलत करना होगा, I know this one thing for a fact. If I go this way, this is not very ethical. If I go this way, this is very ethical. If I go this way, no one knows. Even it's not that ethical, no one knows. Right. No one's going to find out. But there's two people who are going to know. Me and God. हाँ जी, बिल्कुल. Right? ये मैंने ऐसे कर दिया, ये थोड़ा सा गलत था, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये पूरा सही है. अगर मैं ये रास्ता भी ले लूँ, को मेरी लाइफ को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ जी. किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, I'll be okay. बट दो बंदों को पता है, मुझे पता है और भगवान को पता है. हाँ जी. है ना? अगर मैं ये रास्ते जाता हूँ, मेरी एनर्जी चेंज्ड. बातें मैं सेम ही करूंगा, पिच मेरी सेम ही है, प्रेजेंटेशन मेरा सेम ही है, बट एनर्जी इज चेंज्ड. एंड देन व्हेन आई सिट डाउन विद समवन, दे आर गोना बी लाइक, यार ये बंदा बात सही कर रहा है, पर मन कर रहा है कि किसी और थोड़ी और रिसर्च कर ले कि इसके साथ अभी बिजनेस करने का टाइम नहीं है, मन नहीं है, दिस एंड दैट. आपके साथ ऐसा कभी हुआ है that someone tried to scam you or like you felt the energy and Many times. Okay. Many times. The thing is, negative people, they're often drawn to more negative people. People who have victim mindset, जी. their friends are also victim mindset. Boo-hoo, why is it raining? We live in Vancouver. It's always raining. What kind of mindset is this? Okay. Like people are dying in Africa, bro, because they don't have water. Change your perspective. It's crazy. I'll share this story. I was at Saving Foods. I put out Lotto Max, right? And then I was talking to this girl. She was born here. Again, not taking shots. Anyone who's born here, I love those guys, right? And then she goes, I was like, I checked my ticket. Did I win or no? I didn't win, right? And then I was just talking to this girl. She was like, you know what? Did you win? I was like, no, I didn't win. I was like, okay, just out of curiosity, what would you do if you won $1 million, right? She was like, the first thing I will do is I'll get out of Vancouver. I was like, at this point it's in Vancouver. I'm like, okay, why? She's like, there's too much nature. Okay. I was like, okay, fair enough. Again, perspective. जी. Grew up here, lots of entitlement, lots of mindset, victim mindset that, okay, why am I here in Vancouver? Dude, I don't come, like, this is heaven. There's people, as long as, like, I woke up this morning, the first thing is I have fresh water to eat, and I live here. This is like blessings. Just because you're in Canada, it's a blessing. Even if you're in India and watching this, dude, you're blessed. Yeah. It's Even perspective. Yeah, man, it's like 100%. I was at this conference. Before going to that conference, you know what my mindset was? Again, victim, a little bit. Everyone has it. I'm not saying I'm perfect. I was thinking, yeah, man, like, mere business mein thode challenges hai. Maybe I'm young and stuff. I go to that conference. The girl who came up as a speaker, she was like, I grew up in Pakistan. My dad was dragged out of my house and someone shot him in the face in front of her. And then her and her mom moved here as refugees.
I was like, dude, my problems are pretty much first world. are like so small, dude. Her problems. And then she's making it happen. So whenever people think, oh, I have a lot of problems in my business, okay, तुझे लगता है तेरी life ये है, वो है, this and that, you have a lot of problems. ठीक है, एक बंदा और है जिसके साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है. After you hear his problems, you know what you're gonna say? नहीं भाई, मेरी problems मेरे पास रहने दो, उसकी problems उसके पास रहने दो. अगर तुझे chance मिलेगा कि switch करनी है problems, जी. नहीं, you will be like नहीं, इस बंदे का डैड ये हो गया, उसकी मॉम को ये हो गया, उसको ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. So even if you're watching this podcast, listening somehow, somewhere, and you can actually listen, good bro, you're blessed. Now you just work on yourself. Exactly. I mean, like, it's all about perspective and mindset. आप किस चीज़ को कैसे देखते हो, जैसे वो glass is half filled और वाली story, right? Yeah, some people are like glass is half full, so some people are like glass is half empty. I just think like there's more room in the glass and you can pour more. Exactly. That's a nice perspective too. Yeah, it's not a half full or half empty for me. I can pour more. ठीक है, सही है. Okay. Just out of curiosity कि अगर एक person है, he just has like, I mean, $100, let's say $100 or like $150, and he wants to start investing, how should he exactly do this? वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करे? वो desperately स्टार्ट करना चाहता है, but there is no direction. What would you suggest him? First of all, understand $100 is not a lot of money. जी. And $150 is not a money. I'm not saying that for investing. I'm just saying that as a perspective. If people think $100 is a lot of money, then $100 you're like, oh no, $100. It's my life savings. What's gonna happen to me? No, bro. Just think of money as a tool. Money is a tool. Right. Okay? Money is not like, okay, you know what, like ab money aa gayi, now everything all of a sudden is rainbow and sunshine. Sure, it'll solve your problems. But if you think your success is here, money is here. Success बंदे की money से calculate नहीं होती. बंदे की success है जो वो किस areas में है उस हिसाब से calculate होगी. ठीक है. और जो money है, it's just a tool. Okay? So starting to your question कि हाँ भी उसके पास $100 है. Good. First of all, understand, bro, $100 is not a lot of money. क्योंकि अगर तेरे माइंड में ये हुआ कि $100 बहुत ही बड़ी अमाउंट है और $5,000 बहुत बड़ी अमाउंट है और $1 million भी बहुत बड़ी अमाउंट है, then you're never gonna think big. जी. मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भी अपने पैसे उड़ा दो जाके, है ना? exactly. मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पैसे को आग लगा के जल्दी ओके $1,000 ये हो गया, 5,000 हो गया, ओके ट्रिप पे चले गए. No. Every dollar is valuable. You should save it. No, 100%. You shouldn't spend it. You should save it as much as you can. But at the same time, change your perspective. Say, hey, you know what? I can bring more. I can do this. $4,000 is not a lot of money. I moved from this city just recently 2-3 months ago, and I came to downtown. I talked to one of my friends, and I'm like, okay, this is my rent, $4,000 a month. Okay. He's like, bro, this is so expensive. $4,000. I was like, yeah, $4,000. He's like, $4,000, it's so expensive. I talked to my mentor. He lives in the next building, ठीक है. right? His rent is $10,000. His mentor's rent is $20,000. Okay. Perspective. And they think, अब बंदे ने जब महीने, वो ये नहीं सोच रहे कि मेरी जेब से 4,000 जा रहा है. वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर रह के मेरी जेब में $1 लाख हर महीने, $2 लाख हर महीने, $3 लाख आ रहा है. ठीक. So उनका perspective completely different है money के बारे में. Because again, they don't look at money as a tool. Okay, ये tool मैं यहाँ पे use करूँगा. $4,000 invest किया, $1 लाख आ गया. Good. Now $100, you should invest it in a safe way, following 2 rules. पैसे कभी भी zero पे नहीं जाना चाहिए. Over time, it should only go up in value. ठीक है. So जो $100 है, it's gonna compound. ठीक है. And with $100, if you're in your 20s, you can retire. Again, this is not financial advice. Yeah, Again, we are just going by a general case. Yeah, depending on what scenario you are in and everything. Let's take my example. Like if you should first of all you should sit down with a financial advisor. Second, $100 is gonna go a long way if you start investing. You can retire with $500,000, $200,000, dependent on what kind of compound interest you're getting on your money. So sure, $100 you should invest with 2 rules. Money will never go to zero. Over time, it will only go up in value. Whatever money you're investing in, crypto is not that investment because it could crash, it could go to zero. You don't know, or it could double. Stocks, single stock is not that investment because it could double or it could go to zero. You don't know.
right? Real estate is that type of investments. Mutual funds, index funds, these are basically type of investments that follow two rules. It'll never go to zero. Over time, it'll only go up in value. But again, you should like sit down with a professional who can guide you. Some people think, oh, but then they're gonna charge so much fees. Bro, if you're thinking that, hey, you know what, I'm gonna stay unhealthy and unhealthy होके मुझे personal trainer को $10 नहीं देने, $50, $200 का financial और diet plan नहीं लेना, मैं overweight होके diabetes से मर जाऊंगा, मुझे वो अच्छा है. Change perspective. Right? Change. $10 invest करके $100 की opportunity है, change. बिल्कुल. Right? Yeah. नहीं, that's a really nice perspective. देखने में तो वैसे सिर्फ $100 है, Yeah. but वैसे भी सोचा जा सकता है कि $100 है, एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है. 100% किया जा सकता है. Yeah, it's a saving. That is how I am starting, right? Yeah, you should 100% start with something. Anything you should start. But at the same time you're starting, keep changing your perspective. Because अगर हमारे लिए $100 बहुत बड़ी amount है, then हम 10,000 कब बनाएंगे हर महीने का, 20,000 कब बनाएंगे. जब like मैं सोच रहा हूँ कि $100 ही बहुत बड़ी amount है. Right? It's a good start. If that's what you can do, that's what you can do. No problem. Get started. But then keep educating yourself so you can go to $10,000 a month. $100 पे अगर 10% का इंटरेस्ट आएगा साल का, कितने हो गए? $110. अगर मैं एक्स्ट्रा $10,000 बना लूँ तो हर साल का. That's true. Perspective again. Perspective. Yeah. Okay, since we are talking about money, I want to talk about your perspective on this. Can money solve all your problems, or what do you think about money? Obviously, I know that you think it as a tool, but can it solve all your problems? Because अगर मैं पूछूं, you're living in a nice apartment, it's a great apartment, right? Sure. So मेरा perspective, okay, यार शायद मैं भी इतने पैसे कमा लेता तो मैं भी ऐसे रह रहा होता, right? Something like that. But what are your thoughts on money exactly? Yeah, so money shouldn't be tied to your happiness or your self-worth. First of all. ठीक है. You can be happy no matter what. You can be grateful no matter what. Every day you are functional, you're healthy, good. अगर तेरे पास $10 million है but तेरी body you can use your legs, क्या करेगा 10 million का? Exactly. Right? So health से ऊपर है spiritual, right? You should be spiritually like remembering God, thinking about God. Then is health. Then it's family. Okay. And then it comes business. So faith, family, and then business. Talking about money, again, it's a tool, but money is not going to solve 100% of your problems, but money will solve 99% of your problems. Money is not everything, but जितनी important oxygen है, उतनी important money है. So उनकी ranking same है. ठीक है. Right? और जो 99% problems will solve करेगी, now you're going to have a better quality of life. ठीक है. Right? So again, you used it as a tool. It's not going to solve 100% of your problems, because if you have a personal relationship problem, it's not going to solve that because you're not a good person. Money's not going to solve that no matter what you do. ठीक है. But 99% of the problems in your relationship are not going to happen if you had more money. I remember like 7-8 years ago when I was my friend. When I was in this relationship with this girl. 80% of the problems were for money, bro. 80% of the problems were because of money. Like I think like almost 10 years ago. Oh, can't go to this restaurant. Oh, okay, can't do this. Oh, okay, can't do that. Okay, I can't buy you presents. I can't do this. Come on, bro. So those 90% of the problems wouldn't exist. Achha. Now you look for a girl thinking about like you can afford her things, or या फिर you look it from the other perspective, like whether the compatibility match or वैसा सब कुछ. There's only one quality I need. Just one quality and one quality only, which is willingness to grow. Okay. Sometimes people confuse that they're planted instead of buried. अच्छा. So इसका मतलब ये हो गया कि कभी लोगों को लगता है कि असल में वो क्या होते हैं, थोड़ा अंडरग्राउंड होते हैं, सो दफनाए हुए होते हैं, मिट्टी से बाहर आना होता है. हाँ जी. ठीक है. लोग क्या कंफ्यूज कर लेते हैं उससे कि हाँ मैं एज अ प्लांट यहाँ पे मैं प्लांटेड हूँ, यहाँ से मैं ना इधर जा सकता हूँ, ना मैं उधर जा सकता हूँ, ना मैं इधर जा सकता हूँ. वैसे. That's it. Or not even up. You're just planted जैसा तो तू वैसा ही रहेगा. ठीक है. Right? Even if the tree grows, people think you're a tree, you cannot move. But the reality is you're not planted. You're just dafnaye hue. That you can climb out of it. And you can go anywhere you want. Right?
So the girl, like whoever you look for, there should be only one thing only. Willingness to grow and change. That's it. As long as she has the willingness to change and grow, no problem. Because agar you get into a relationship when you're rich, you lost all your money, paise nahi hai, then what? So you shouldn't look at like girl like okay abhi main isko afford kar sakta hu because there could be a time tu usko nahi afford kar sakta. बिल्कुल So agar wo paise ke liye aayegi to paise ke liye jayegi. बिल्कुल सही बात है. है ना? You should look at it as like okay energy match हो रही है, vibe match हो रही है and she's willingness to grow क्योंकि तेरी life same नहीं रहेगी, उसकी life same नहीं रहेगी. You are gonna grow as a person, she's gonna grow as a person. है ना? So अगर तुम दोनों साथ में grow करते हो, very good. ठीक है. Right? अगर तू grow कर रहा है वो grow नहीं कर रही, there's gonna be problem, there's gonna be friction. ठीक है. So both of you should grow together, right? But अगर तू grow कर रहा है, तू ये चीजें सीख रहा है, तू podcast सुन रहा है, books पढ़ रहा है, वो कह रही है shut this off. हमें इसकी जरूरत नहीं है. Let's go out. Let's out. That's fine. Right? तो क्या ये motivational this ये बात करता रहता है. You shouldn't do this. Like ये सब books वगैरह बकवास है. But then you go okay no like listen ये हमें इस बारे में सिखा रहे हैं, ये हमें इस बारे में सिखा रहे हैं, ये हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे हमने kids अच्छे से कैसे raise करने हैं. She goes no it's all BS. There's no willingness to grow. ठीक है. When there's no willingness to grow, you cannot change her. Okay. So then you say bye. Have a good day. I'll pay for your food. Ranveer, Keep liking my pictures on Instagram. So. okay. ये रील काट ली हमने यहाँ से. Just kidding. Okay. लेकिन आपकी हर बात में एक लेवल ऑफ पॉजिटिविटी है. हर चीज को एक पॉजिटिव तरीके से देखते हो. What do you do for that? Like रोज ऐसे पॉडकास्ट कंज्यूम करने या do you read a lot या okay. There is another perspective. आपका भी कोई मेंटर होगा, right? Sure. तो आप उनसे बात करते हो इस बारे में that you need regular training about your mindset और stuff. उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहो तो? Yeah, so mentorship I think is very important, right? I think first एक तरीके की जो mentorship है जो सब लोगों को पता है इसकी ओके ये मेरा mentor है इसके पास ऐसे results हैं तो मैं इसे सीखता हूँ. दूसरे I think you need two types of mentorship. The most important one you need is from God. ठीक है. Okay. But again, this is not a spiritual podcast, with more about business and stuff. So one, whatever works for you, right? So one is that mentorship. उससे बड़ी कोई mentorship नहीं. ठीक है. That's it. That's not the most important mentorship. Second mentorship, जो सबके लिए ज़्यादा tangible होगी. Sure, it's books and everything, but remember, whatever goes in comes out. So if you positivity goes in, positivity comes out. Now जो मेरा mentor है, he's at the age of 27. उसकी income थी हर महीने की $1,00,000. 5 साल के बाद उसकी बिजनेस में हर महीने की $1,00,000 इनकम है. पैसिव. सिर्फ पैसिव. राइट? सो श्योर जब आप ऐसे लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, सीखते हो उनसे, यू आर गोना बी मोर पॉजिटिव, बट यू आर नॉट पॉजिटिव एवरी डे. हाँ जी बिल्कुल. आई एम नॉट पॉजिटिव एवरी सिंगल डे. At every single day, when you're more self-aware, there's going to be a moment. Moment क्या होगी? Okay, now I'm in this headspace. जहाँ पे when you're not super positive. ठीक है. अब मेरे पास एक ऑप्शन है. Should I scroll on Instagram and watch a funny reel? Or should I put that down and go read a book? Or should I go do what I need to do? If you do scrolling, you have lost, you should change. Right? If you put that down and then you actually go towards positive habits, then dopamine kicks in and then there's gonna be a snowball effect. So coming back to the positivity, I think a lot of that has to do with like me being spiritual. A lot of it has to do with कि हाँ I'm surrounded with successful people that are positive. अगर मेरे friend circle में ऐसी बातें होंगी कि you know what, रणवीर, तू जिस पर भी अपनी बनाएगा ना, तो तू गोल जो भी सेट करेगा तू वो अचीव कर सकता है. तू ऐसा बनता है. ओके. अगर मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं हैंग आउट कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं ब्रो ये हो गया तेरे बिजनेस में तो क्या है, गेट अप, कीप गोइंग आफ्टर इट, यू आर अ चैंपियन. राइट. That's what I tell myself. Yeah, that's very good. The number one mentor, like sure, like that's you lead yourself. You're the leader of yourself, right? That's very good. But अगर मेरे friends ऐसे होंगे, yeah bro, this thing wasn't gonna work anyways. Yeah bro, जो तूने business start किया वो तो वैसे भी नहीं काम करने वाला. Gaslighting effect. That's it. Then you're just gonna be like,
इवेंचुअली थोड़ी नेगेटिविटी होती फिर हम लोग भी उनके जैसे हो जाते हैं। जैसे ही हम वी आर गोना बी लाइक टॉप 5 बंदे जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा हैंग आउट करते हैं, वी आर गोना बी लाइक दैम। सो अगर उनका माइंड सेट है कि हाँ कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, नो ब्रो, यू नीड टू चेंज, राइट? अगर उनका माइंड सेट है कि नहीं यार दिस वाजंट गोना वर्क, स्लोली पहले तुझे होगा कि यार दिस इज सो डिफरेंट, आई एम नॉट लाइक दिस इज, तुम यू विल आर्ग्यू विद देम कि नहीं यार ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद you will find yourself doing the same thing. Exactly. कोई और उनका फ्रेंड ग्रुप का होगा, वो कहेगा ऐसे होगा, तुम्हारा बिलीफ चेंज हो गया, बिलीफ सिस्टम जी, क्योंकि अब तुम उनके जैसे हो गए हो, क्योंकि ज्यादा नेगेटिविटी अंदर गई, इतनी पॉजिटिविटी अंदर नहीं गई, अब जो बाहर आएगी वो भी नेगेटिविटी होगी। एग्जैक्टली। अगर एक कप में डर्ट फिल हो जाए, पानी है डर्ट फिल हो जाए, बिना पानी को वो कप एम्प्टी करे, उससे डर्ट हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? Think about it. Exactly. How can we take the dirt out? उसके अंदर और फ्रेश पानी डालकर, right? And then the dirt comes out. So positivity goes in, positivity comes out. Okay. Yeah, because मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर खुद को आप ऐसा फील नहीं कराओगे, मे बी इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड या आपको कोई मेंटर कर रहा है, यू नीड टू टेल योर सेल्फ एवरी डे दैट you have to have that self belief जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, because it is very important, because सारा टाइम वो मोटिवेशन नहीं रहेगी and you'll not be having success or ups all the time, वो जर्नी ups and downs वाली रहेगी। So about that part कि जहाँ पर आपके lows आते हैं, या फिर just take a scenario जहाँ पे you are so confident about striking let's say closing a client deal or anything, Sure. And it doesn't happen and you're so positive about it and it's gonna give you a lot of good results. Yeah. So how do you recover from that? Yeah, so it's just the mindset of having no expectations. Okay. Having no expectations. So you do the work, but मेरा गोल है कि हाँ भी मेरे end of the month मेरा ये result आना चाहिए। ठीक है। For example, you need 1,000 views on your video. ठीक है। अगर हम ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हाँ मुझे इंस्टाग्राम से ही व्यू चाहिए, शायद आए शायद ना आए, पर अगर मेरा गोल है कि हाँ भी मुझे 1,000 व्यू चाहिए, मैंने इसको लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब जगह प्रमोट कर दिया जितनी जगह हो सकता था, देन 100% you're gonna reach your goal. जी। पर अगर इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया, नहीं आए, देन हमारी एक्सपेक्टेशन इंस्टाग्राम पर थी। जी। नाउ you're gonna like इंस्टाग्राम नहीं काम करता, this is BS, right? So that same goes in personal life. अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ भी ये बंदा है, so entrepreneurs listening to it, ये बंदा अगर क्लोज हो गया, I used to think like that, भाई अगर ये बंदा क्लोज हो गया तो चांदी होगी 10,000, 20,000, $1,00,000, फिर मैं सोचने लग जाता यार मैं $1,00,000 का क्या करूं अगर मैंने ये क्लोज कर दिया, ये मुझे ये करना है, बाद में बंदा क्लोज नहीं हुआ, देन यू गो हियर। इंस्टेड मेरा माइंडसेट क्या है, वहां पे जाना है, बंदे की हेल्प करनी है, और जितना सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन हो सकता है मैंने वो करना है, बाकी भगवान पे छोड़ दो। मुझे ये पता है अगर मैं इनफ लोगों के साथ अच्छे से प्रेजेंटेशन करूंगा, ये पहले रख के कि हाँ मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, आई एम गोना विन, राइट? अगर मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये बंदा क्लोज हो गया, ये होगा ही होगा क्लोज, जो मर्जी इसको जरूरत है प्रोडक्ट की, ये होगा क्लोज, जब वो नहीं होता देन मेरी रिजेंटमेंट उस बंदे की तरफ होगी, रिजेंटमेंट होगी कि ये बंदे ने मेरे पास ये एक्सपेक्टेशन थी और ये बंदे ने वो मीट नहीं की। हमें सिर्फ एक ही बंदे से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो है योरसेल्फ। ठीक है, दैट्स इट। डिड यू गिव योर बेस्ट? हाँ, और एक्सपेक्टेशन माइंडसेट नहीं होना चाहिए किसी और की तरफ कि यार ये मैंने बंदा हायर कर लिया अपने बिजनेस में, अब ये करेगा, शायद करे शायद ना करे। अगर उसने नहीं किया देन यू बी लाइक मैं सोच रहा था ये करेगा, इसने ये नहीं किया, ही इज डिसअपॉइंटेड मी। अब तुम्हारी स्लोली you're not gonna feel it, but थोड़ी resentment towards that person. बिल्कुल। If you're in a relationship, now you had expectation, she's gonna do this, she doesn't do it, resentment, and then you start hating toward that person. Why? Instead, be like, okay, you know what? मैं ये relationship में जा रहा हूँ, I'm gonna do my best. I'm gonna do this. मैंने decide किया मैं कल जिम जाऊँगा, मैं books पढ़ूंगा, मैं business करूँगा, and that's it. ठीक है। I do that for long enough, I'm gonna win.
I'm gonna present to that many clients. They close. I'm gonna do my best to help them. If they don't, my mindset first in the business was ये बंदा बस हो जाए close. Like normally yeah, होता ही है ना, होता ही है. But then later it changed to मैंने बस अपना बेस्ट करना है, रेस्ट उनका डिसीजन है. और अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उन्होंने मेरे साथ काम नहीं करना, उनका लॉस है. ओके मेरा नहीं है. सही बात है बिकॉज आपके इंटेंशंस राइट हैं. यू थिंकिंग अबाउट कि उनका भी बेटरमेंट हो, जैसे कि आपने पहले शेयर किया. इंटेंशंस राइट है. प्लस मेरे जैसा तो एक ही है ना. सही बात है. मुझे पता है कि मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उनके लिए ये कर सकता था. हाँ. और बंदा मेरे जैसे नहीं कर सकता. ठीक है. मेरे से अच्छा नहीं कर सकता. ठीक है. That's it. So उनका लॉस है. I just go, I'm sorry I couldn't help you. Okay. Many times like पहले बिजनेस में जब हम स्टार्ट करते हैं डेस्परेट क्लाइंट्स के लिए, ये क्लाइंट भी आ जाए, ये क्लाइंट भी आ जाए, है ना. कोई भी बंदा स्टार्ट करता है. अब energy is not good for the client. And I'm like, hey bro, it's not gonna work out. Sorry I couldn't help you. Okay. जब किसी को ये कहते हो ना, sorry I couldn't help you, तो उनका दिल टूट जाता है. Then for the rest of their life there's regret. Yeah, यार ये बंदा मेरा एडवाइस. ओके अच्छा, मतलब मेरी हेल्प ही करना चाहता था. Yeah. Okay, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था. yeah. Good. Okay. You talk about because आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड आई होप इससे बेटर होता रहे एंड इट्स ग्रेट. मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला राइट. पर स्टिल आपने बोला कि आप लेसन्स में बिलीव करते हो, बट स्टिल आपके माइंड में ऐसा कुछ रिग्रेट है पास्ट के टाइम में से कि आपको ये करना चाहिए था? अगर रिग्रेट रखूंगा तो अपने आप से कंफर्टेबल कैसे होऊंगा? बट स्टिल कभी तो होता होगा. Sure, let's talk about that. So first, if you have, think about it this way, if you have a regret about something, then would anyone genuinely do something bad for themselves? No. So जब मैंने जो डिसीजन लिया होगा उस मोमेंट में मुझे लगा होगा ये बेस्ट डिसीजन है. मैंने तभी डिसीजन लिया ना. बिल्कुल सही बात है. अगर पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ भी किया है, ओ माय पेरेंट डैड हेल्प मी डिड दिस डिड दैट, भाई उसको लगा था, डैड को लगा था, मॉम को लगा था कि इसके लिए फिलहाल के लिए ये बेस्ट डिसीजन है, तभी उन्होंने ऐसे किया. कोई जानबूझ के अपना काम खराब नहीं करेगा, कोई जानबूझ के अपना बिजनेस खराब नहीं करेगा, अपनी लाइफ खराब नहीं करेगा. सो रिग्रेट किस बात का रखूं, क्यों रखूं? अगर मिस्टेक हुई है, कोई मिस्टेक हर रोज होती है, कोई ना कोई हो जाती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया. बेस्ट थिंग इज रिग्रेट अगर कोई है, एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट. यार ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं हुआ, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना. ओके, एक्सेप्ट इट एंड देन फॉरगिव योरसेल्फ. ठीक है कि यार कोई बात नहीं, तुझे लगा था ये बेस्ट होगा, नहीं हुआ, आज से मैं ये सीख के ये ऐसे से अच्छा करूंगा. अगर रिग्रेट रखेंगे, थिंक अबाउट इट दिस वे. अगर मैं कहूँ कि अमन तुझे किस बात का रिग्रेट है, तू सोचने लगे कि हाँ मुझे इस बात का रिग्रेट है, अभी तेरी फीलिंग कैसी है, नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव. अभी अपने पास अपने आप के लिए तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम कैसा है, लो और हाई? लो. कॉन्फिडेंस तो लो हो जाएगा क्योंकि पास्ट में नेगेटिव रिजल्ट्स मिले. जब उसके बारे में हम सोच रहे हैं, हमारे माइंड को लग रहा है कि ये इवेंट सच में हो रहा है, क्योंकि माइंड को ये नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता कि ये इवेंट असल में हो रहा है या ये पास्ट में हुआ है. माइंड बस फीलिंग समझता है ना. सो अगर हमने ये वो फील कर रहे हैं जो वैसे जब इवेंट हुआ था वैसे फील करें, कॉन्फिडेंस लो करें, सेल्फ एस्टीम लो करें. वाई? खुद के अच्छे कोच बनना है, खुद के लिए बुरा कोच नहीं बनना. अच्छा कोच क्या करेगा? ब्रो पास में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कोई बात नहीं, हो जाता है, डजंट मैटर, उससे हमें ये सीखने को मिला, नाउ लेट्स मूव ऑन. ब्रो मेरी सेल्फ एस्टीम लो नहीं हुई, कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ, मन में ये नहीं रहा कि हाँ भी ये रिग्रेट है. नो रिग्रेट्स. किस बात के रिग्रेट्स? जब मैंने वो डिसीजन लिया था तब मुझे लगा था वो बेस्ट है. ये पॉइंट बिल्कुल अच्छा है आपका, बिकॉज मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं भी ऐसे सोचना शुरू करूँ कि हाँ यार मैंने उस समय अपने लिए तो बेस्ट ही सोचा था ना, मैं कैसे अपने लिए गलत सोच सकता हूँ? क्यों सोचूंगा? अब अगर पेरेंट्स ने, लोगों को लगता है मेरी परवरिश अच्छी नहीं की, भाई उनको तो लगा था ना कि ये उनके तेरे लिए बेस्ट होगा. उस वक्त उनके पास कौन सा यूट्यूब था, उनके पास कौन सा गूगल था, उनके पास कौन सा बुक्स थी जो हमारे पास है जी. उन्हें लगा था कि हाँ भी अगर इसको मैं ये करूं तो बेस्ट है. सो अब हम अपने पेरेंट्स के लिए रिजेंटमेंट रखें. व्हाई? या हाउ इज दैट गोना हेल्प यू? जब भी हम रिजेंटमेंट के बारे में सोचेंगे तब वो जो नेगेटिव फीलिंग उसके साथ अटैच थी, वो फीलिंग हमारी माइंड में दोबारा आएगी. जब वो फीलिंग दोबारा आई, इन मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, हाउ इज दैट गोना हेल्प?
राइट? ट्रू एजुकेशन इज अपने माइंड को ऐसे सोचने पे ऐसा हमारा माइंड सोचना चाहिए कि जिससे हमारा बेनिफिट हो. राइट. अगर यू स्टार्ट द पॉडकास्टिंग, अगर यू आर थिंकिंग यार मेरा पॉडकास्ट कौन देखेगा, ओह मुझे ये 5 साल पहले शुरू करना चाहिए था, आई हैव रिग्रेट. मेरे साथ वाले तो बहुत ऊपर है. या सो दैट्स नॉट गोना हेल्प. अगर तू ये सोचे ब्रो मेरे जैसा बंदा पॉडकास्ट में आना चाहिए, देयर इज नीड फॉर दिस, मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगा, मैं हिंदी इंग्लिश पंजाबी 3 लैंग्वेजेस में बात करूंगा, मेरे जैसे बेसिकली पॉडकास्ट की वैल्यू बहुत हाई है. काफी लोगों को अभी 7 बिलियन पीपल है, 1.4 बिलियन पीपल इंडिया में है, 1.4 बिलियन में से 1 बिलियन पीपल मेरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं. अगर टॉप वाला भी कोई पॉडकास्ट बंदा से ले लें इंडिया में से, उसके कितने फॉलोअर्स होंगे? 10 20 30 40 50 और वो लोग भी मेरा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं. दैट्स इट मैन, दैट्स इट. लोगों के पास टाइम है कंज्यूम करने के लिए, सो व्हाई नॉट मी? एंड आई नो दैट आई एम गिविंग माय बेस्ट शॉट टू क्रिएट सम वैल्यू टू माय व्यूअर्स. या 100%. पर अगर अब यू आर थिंकिंग, मेकिंग योर माइंड थिंक इन अ वे व्हिच इज गोना प्रॉफिट यू. हाँ जी बिल्कुल. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट्स गोना प्रॉफिट मी. There you go. Right? So माइंड को ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ भी हमें ये माइंड हमारे कंट्रोल के अंदर है. ठीक है. ये माइंड हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए. बट ये मेरे को लगता है ट्रेनिंग से ही आता है. ट्रेनिंग से आएगा, 100% ट्रेनिंग से आएगा कि हमारा माइंड है, हमने डिसीजन लेने, माइंड ने डिसीजन नहीं लेने जी. और माइंड ऐसे सोचने पे मजबूर करो जब नहीं हो रहा, नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो ब्रो, कम ऑन, ताकि वो आपकी लाइफ में और है बेसिकली यू कैन मूव फॉरवर्ड फास्टर. Okay. Moving towards the end of the podcast, is it like this career, whatever you're pursuing right now in the finance industry, is it your take two, or like you have things lined up in your mind which you are still holding yourself back on कि आप यार ये कर सकते हो, but at this point of time you are not ready for it? Is it your take two, and are you following your dream exactly जो कि आपने सोचा था? सो टेक टू को पहले मुझे मतलब बताओ, ऑडियंस को भी बताओ. मैंने ऑलरेडी काफी शेयर किया. सो टेक टू इज बेसिकली ये चैनल, दिस इज द सेकंड टेक ऑफ माय लाइफ, राइट, वेयर आई विल बी एक्चुअली एक्टिंग ऑन माय ड्रीम्स, जो मेरे दिमाग में, जो कि मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर काम करूंगा, जस्ट सोचूंगा नहीं. सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आपकी लाइफ का टेक टू है, या आप स्टिल अपने आप को होल्ड बैक करके रख रहे हो अपने ड्रीम्स या जो भी आपने दिमाग में रखा है जो आप करना चाहते हो? सो टेक टू होगा कि सेकंड चांस इन लाइफ, या यू आर गिविंग योरसेल्फ अ सेकंड चांस और नॉट, या सेकंड लाइफ. सेकंड लाइफ, right? So there's a very popular saying that we all have 2 lives, and the second one starts when we realize that we only have one, right? And I realized that so point of shift. So is this your point of shift? So take two, second take of your life, and are you acting on it? I think the philosophy which you just mentioned, that hey, you know what, you are going to change, I think it's going to happen for the rest of everyone's life. There's always going to be a stage, they call them breakthroughs. But this is the first time I'm hearing that hey, you realize you only have one life, that's your second life. Sure, that's one way to think about it, right? But for me it's more about like the breakthroughs and stuff, like you're going to keep having breakthroughs for the rest of your life, no matter what. You're going to keep going to the next level. हम एक level पे अगर पहुंच गए, level 1 पे, level 5 पे पहुंच गए, ऐसा मतलब ये नहीं for the rest of my life मैं level 5 पे पहुंचूंगा. 6 7 8 9 10 infinite levels, right? So the question is कि क्या ये मेरी लाइफ का take two है? Is that what you're saying? अपने आप को होल्ड बैक तो नहीं कर रहे हो? No reason to hold back. Hold back किस चीज का है, right? So the thing is, जो हमारे ड्रीम्स हैं, और बेसिकली जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमें लगता है कि ये डेस्टिनेशन है, दैट्स इट, राइट? पर वो डेस्टिनेशन चेंज होती रहती है. ठीक है, राइट? फिलहाल एक माउंटेन क्लाइंब की, व्यू बहुत अच्छा है, एंजॉय किया, ग्रेट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. वो माउंटेन क्लाइंब की, ग्रेट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. सो होल्ड बैक किसी फिलहाल चीज़ का नहीं है कि हाँ मेरे मन में ये नहीं है. एक्चुअली मेरे मन में था कि मैं थोड़ी मॉडलिंग करूँ. अच्छा, ठीक है. बट मैंने सोचा, फिर मैंने थोड़ा स्मार्ट होके और सोचा कि यार ओके, मुझे मॉडलिंग में सोच रहा हूँ करने की, उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे. लेट्स थिंक अबाउट इट. ओके, I could do this, I could do this, I could do that, I could do this. And there's this competition called Mr. World. I was thinking I should compete in that. Again, hold back किसी चीज़ का नहीं. I was thinking I should do that while I'm doing whatever I'm doing. Then I saw their lives. Again, nothing against Mr. World. You guys do great things, I'm sure. But then I saw their lives, like they are asking rich people for charity.
I was like, okay, fair enough. Nothing wrong with that. Makes sense. But then they win the title, and I was like, okay, once you win the title, then what? Right? And then they're traveling all over the world. They raise charity, they do volunteer. I was like, मैं तो बिना ये title के भी कर सकता हूँ, and then I can basically be the rich person who's donating money. Yeah. Instead of the one being like, hey, can you donate to this charity? Right. So that's called a decision, a calculated decision. ठीक है. अगर वो बहुत मुश्किल होता मिस्टर वर्ल्ड बनना, मैंने ट्राई की पर मुझे लगा बहुत मुश्किल है, मैंने क्विट कर दिया, देन आई एम अ क्विटर. ठीक है. तो मैंने अपने ड्रीम्स परस्यू नहीं किए, देन आई क्विट. नो प्रॉब्लम. अगर क्विट करके मैंने सब कुछ छोड़ दिया, नाम अ लूजर, देन यू आर अ क्विटर. अगर वो ड्रीम छोड़ के अगर तुमने कुछ और परस्यू किया, यू आर अ विनर. पर मेरा जो डिसीजन था, मेरा कैलकुलेटेड डिसीजन है कि ये मैं करूंगा, मुझे ये मिलेगा, क्या मुझे ये लाइफ में चाहिए, इज इट गोना बेनिफिट मी? देन आई डिसाइडेड इन माय लाइफ, नो. जी. No, I don't need that. Okay, great. Keep going. And if there's anything that's going to come in my life, which I think, okay, I should do this, I'm actually going to like, if I have the time, I'm going to do it. But right now, there's no such thing, which is like, okay, I want to do this, or I want to do that, or I want to do this. This is exactly how I've imagined, well, plan my life. And then in the next 2, 3, 5 years, we have some big goals. So we're going to make those happen too. When are you planning to get retired? Retired? Do you have an age in mind? I think retirement is just... No, not working, just thinking about, oh, I need money. So financial freedom. Financial freedom, yeah. Financial freedom age. So there's two things, retirement and financial freedom. I think when you're retired, you're just kind of wasting your life. Yeah, exactly. You just get one shot at this life. People think, oh, agar mera $10 million ban gaya, I'm retired. Bro, you're never gonna make 10 million. You know why? God is not gonna give you 10 million. Because you're going to go retire, you're not going to provide any money in the world. Maybe it will happen once in a million times, sure, whatever. But your billionaires, Mark Cuban, for example, but that guy's not retired. He's on Shark Tank, 10-hour sets. He's working, right? Or successful look, they're not retired. Retired hoke kya karoge? You're going to sit home and either you're growing or you're dying. You're going to be the happiest. सबसे खुश बंदा तब होगा when they are growing and giving. Right. If you're not growing and giving, you're not going to be happy. Right? Both at the same time, even better. Now, financial freedom, that plan is by age 30. Oh, are you comfortable sharing your age? Yeah, I'm 27. So I've thrown, next 3 years. I have 3 more years. Okay. क्या करने So that's financial freedom. Again, financial freedom is just like financial freedom, which is like, okay, all your bills. Again, financial freedom is जब हमारे सब bills pay हो रहे हैं, हमारी lifestyle affected नहीं है, और हमें और पैसे कमाने की जरूरत नहीं है. हमारा lifestyle ऐसे ही continue रहेगा जैसे हमें comfortably for the rest of our lives. तब बंदा financially free है. Financially free मतलब हाँ कि जो मुझे चाहिए वो मैं कर सकता हूँ. But again, there's levels to financial freedom, right? जो फिलहाल मैंने imagine किया मेरी life, मैं वैसे ही जी सकता हूँ life, no problem for these 40-50 साल. For me, again, financial freedom right now by 30, but again, शायद मैं वो number increase कर दूँ. So शायद मुझे 35 तक जाना पड़ेगा, 40 तक जाना पड़ेगा again, but I think it's like there's अगर एक चीज़ goals होने चाहिए बंदे के, पर कहीं पे भी full stop नहीं लगाना चाहिए कि हाँ भी ये करके बस. अभी के हिसाब से right now you think like that and आपके mind में ये calculated decision है that I am thinking around 30-ish, I'll be financially free. No, around at 30, I'm financially free. Done. At 30, okay. At 30, I'm financially free, yes. And then I choose if I want to, whatever I want to do, which is most likely going to be, I'm going to continue doing this because I love it, obviously. And again, I didn't love it first. I developed my love for this. Okay. Right? Because you can make yourself fall in love with anything you want. ठीक है. Because मैं सिर्फ ऐसे सोचता था कि यार कितना अच्छा होगा कि मैं भी $1 million कमा रहा हूँ या फिर millions of dollars कमा रहा हूँ. फिर मैंने अपने आप को एक सिनेरियो दिया. Let's say मैं लॉटरी डालता हूँ एंड मैं लॉटरी जीत जाता हूँ. Sure. मेरे पास मैक्सिमम 50 मिलियन है, 60 मिलियन है. Sure. एंड लाइक मेरे दिमाग में आया कि मैं वैसी लाइफ नहीं चाहता. आई वांट टू क्रिएट दैट. दिस इज वेयर द कॉलिंग हैपेंड कि नहीं यार मेरे को वो चीज़ करनी जो मैं करना चाहता हूँ और उसके थ्रू पैसा कमाना है. एंड बिकॉज अगर मैं कोई नंबर इमेजिन करूंगा तो मैं उस नंबर को अचीव करने के लिए लगा रहूंगा हमेशा के लिए. Yeah, and then bro, here's the thing, like जो लोग लॉटरी विन करते हैं, they're gonna end up in a worse financial situation within 5 years. Right. That's the stat.
99% of the people that win a lottery is they're gonna end up in a worse financial situation. मतलब पहले से भी बुरी situation में वो within 5 years. क्योंकि वो इंसान नहीं बने जो कि वो $1 million डिजर्व करते हैं. So उनको $1 million मिल गया, चला दिया. जला दिया. अगर 2 साल पहले मैं यहाँ पे होता, मैं भी जला देता ये सब कुछ. बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि वो इंसान बनना पड़ता है. बिल्कुल सही बात. ये इंडस्ट्री अगर कोई रियल स्टेट कर रहा है, शायद रियल स्टेट रहे, शायद ना रहे. कोई कार सेल्स कर रहा है, शायद वो रियल इंडस्ट्री रहे या ना रहे. पर जो इंसान आप बनोगे, जो वो मार्केट में आपकी वैल्यू होगी, जो आपके स्किल्स होंगे, वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे. सो अगर आप $1 million की सेल्फ वर्थ तक पहुंच सकते हो, मतलब ये बंदे का स्किल सेट ऐसा है, नेटवर्क ऐसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऐसे हैं, ये जनरेट कर सकते हैं अपना खुद का बिजनेस. देन तू कार सेल्स कर, रियल एस्टेट कर, फाइनेंस कर, जो मर्जी कर, यू आर गोना मेक $1 million, नो प्रॉब्लम. So, last question. What do you think about the concept of this podcast, and how was your experience having me as the host of the podcast? Yeah, man, time went by fast. It just feels like we've been talking for 5-10 minutes, but I guess it's already been an hour. You're a wonderful host, man. Like very good energies, right? And you're hustling, and your goal is to provide value to people, which is very, very phenomenal. I know a lot of people that maybe ये जो आइडिया तेरे दिमाग में आया कि हाँ भी मैंने ये पॉडकास्ट करना है टू गिव पीपल वैल्यू, ये तेरे सिवाय और काफ़ी लोगों के माइंड में आया, बट दे डिडंट टेक एक्शन. जी. अगर उन्होंने एक्शन लिया, उनका पता क्या, वो उनका कोई जो सपना था वो किसी ने चोरी कर लिया. भाई तू किस चक्कर में पड़ा है, तेरे से नहीं होगा. ब्रो ये बंदा फेल हो गया. उन लोगों ने उसका बेसिकली जो सपना था ना, वो चुरा लिया गया. उसने उसको बेच दिया. फियर ने चुरा लिया, राइट? फ्रेंड ने चुरा लिया, फेलियर ने चुरा लिया. उसने उसका जो ड्रीम था उसने उसका सेल कर दिया. What you are doing, again, there's going to be things like, okay, ये challenge आएगा. The longer you can go, the more value you can provide. But again, काफी लोगों के mind में ये idea है, they didn't take action. You took action. That's why you're going to win. Yeah, 100%. Right? It's Sunday, 7-9 p.m. You're working, bro. That's why you're going to win. That's why you're going to win big. And when I sat down with you, you were like, hey, you know what? I want to provide value to the people that I'm talking to. They can learn a few things, this and that. Bro, you have something good in your heart. That's why you're going to make it big in your podcast. You're going to make it big in life, no matter what you do. And you're going to rock this thing. Thank you so much. I mean, like, it feels like I have an in-house person who is mentoring me right now, even though I am not in the same industry that you are. Okay. But it like, this conversation has a great mindset shift for me as well, because मैं सोचता था कि trying to think positive out of everything. Sure. But when you get to hear, when you get to have this energy out of someone you're talking to, it's like, okay, yeah, if that person is doing, we can also think like that, right? And it was lovely having you as a guest over here in our podcast channel. And thank you so much for having us in your apartment. Yeah, thank you so much, man. Thank you so much. Yeah, no worries, man. So guys, in the end, I would just like to say, keep dreaming, keep working on your dreams, and make every day count. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.